what is meant by anticoagulants? So anticoagulants, these are the drugs which will prevent the coagulation of blood. Normally ब्लड का कोएगुलेशन होना चाहिए आपका. अगर आपको कोई कट आता है वेन्स में या फिर आर्टरी में, तो आपका ब्लीडिंग हो जाएगा. ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं हुआ तो पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा. So if there is no stoppage of bleeding, so what will happen? Your all blood will be lost from your body, and you will suffer from hypovolemic shock, and you may die. So there is a mechanism inside your body that is known as a coagulation process, blood coagulation process, or known as a blood clotting process, or it is also known as a homeostasis. Okay, homeostasis, blood coagulation, or clotting, all are the synonyms. Very important to prevent the excessive blood loss whenever there is an injury to your blood vessel or your tissue. What do you mean by anticoagulants? Anticoagulants, these are the drugs which will prevent the clotting of blood inside your body. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड योर बॉडी. तो आप बोलेंगे सर क्लॉटिंग तो इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के लिए, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और आप मर जाओगे. एंटीकोगुलेंट क्यों यूज करना है? If there is a clotting of blood inside the blood vessels, normally blood is kept fluid. Blood क्या है? It is a fluid connected tissue, so it is a fluid, so it is kept in a fluid state. It is not a solid. It is kept in a fluid state by 2-3 factors. So antithrombin 3 is there in your blood. So antithrombin 3 क्या है? It is a plasma protein again. So it prevents the blood from clotting. Smooth vascular endothelium. आपने अगर ब्लड वेसल का इनसाइड वॉल देख लिया, दैट इज वेरी स्मूथ वेस्कुलर एंडोथेलियम, antithrombin 3 and continuous flow of blood that prevents blood from clotting. ठीक है, normally. If any pathological condition is there, so if you have clotting of blood inside your blood vessels, अगर clot हो गया blood का body में, and if that clot goes into the minor capillary, जो ब्रेन में आपका ब्लड वेसल्स होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. So if that clot goes into the brain, so you may have suffer from stroke. आपको stroke आ सकता है, आपको paralysis का attack आ सकता है. So if there is a small clot in the blood and that clot goes into your small capillaries of brain, so what will happen? You will suffer from the stroke. You will suffer from the paralysis. Suppose that clot goes into the left hemisphere of your brain. अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो आपका पूरा राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा. So if it goes into the right side, your left side will be paralyzed, because जो क्लॉट जहां पे भी जाएगा उसके आगे का जो ब्रेन का पार्ट होगा उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वहां के सेल और टिश्यू के होंगे डेथ. फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ऑफ ब्लड inside the blood vessel, that is known as a thrombus, and movement of that thrombus inside the blood vessel known as a embolism. So thromboembolism, that is another term. So anticoagulants means these are the drugs which will prevent the coagulation of blood. Okay, pathological coagulation of blood. Thrombolytics, another term is there. Thrombolytics. Thrombo मतलब क्या? Thrombus means blood clot. Lytics means those who break down. So thrombolytics means those drugs which will break down the clot which is already formed. अगर कोई क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो ड्रग यूज करेंगे, दे आर नोन एज thrombolytics. Now another term is there, antiplatelet. So what do you mean by antiplatelets? So platelet क्या होता है? We have seen in the previous 2-3 lectures. So platelets, they are nothing but the thrombocytes. They are the responsible for the blood clotting. So they are the responsible for the blood clotting. Now antiplatelets means process of coagulation कैसे होता है? जैसे आपके ब्लड वेसल को कोई इंजरी होता है, वहां पे आपका ब्लड वेसल का कोलेजन जो है वो एक्सपोज होता है, तो उसको प्लेटलेट जो होते हैं आपके प्लेटलेट्स, दे यूज टू एडियर. प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे जाके चिपक जाते हैं, एडियर हो जाते हैं, एंड दे यूज टू फॉर्म ए प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, पूरा क्लॉट बनाएंगे. सो प्लेटलेट एग्रीगेशन इज आल्सो वन ऑफ द, इट इज अ फर्स्ट प्रीरिक्विजिट फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग. So antiplatelet drugs means what? These are the drugs which will inhibit the platelet aggregation. तो उनको antiplatelet drug बोलेंगे, जो aggregation नहीं होने देंगे platelet. Now why we are studying this anticoagulant, antiplatelet drug, thrombolytic drugs? What is the reason? Suppose you are suffering from, suppose if any clotting is there inside your blood vessel, if that goes into brain, you will suffer from paralysis. If same clot goes into the minute blood vessel of your हार्ट, अगर हार्ट के ब्लड वेसल में अगर वो क्लॉट गया,
So what will happen? You may suffer from myocardial infarction, right? You may suffer from myocardial infarction. You may suffer from angina pectoris if if any clot is there inside the major blood vessels. तो वहां पे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता आपको. जो कैपिलरीज में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है वहां पे अगर वो क्लॉट अटक गया तो उस वो जो कैपिलरी जो एरिया को ब्लड सप्लाई कर रहा है वो एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो टिश्यू मर जाएगा. दैट इज नेक्रोसिस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिसॉल्व दैट क्लॉट और यू हैव टू प्रिवेंट. सपोज आपको कोई मेजर सर्जरी हुआ है. सर्जरी होने के बाद में क्या होता है कि जो आपका टिश्यूज या ब्लड वेसल कट होता है तो उसको रिजॉइन करते हैं सर्जरी से. नाउ देयर इज अ ब्लड क्लॉटिंग. अगर वही क्लॉट आप बाद में छोटा माइन्यूट क्लॉट अगर ब्रेन में गया तो पैरलिस होगा. सो टू प्रिवेंट दैट further growth of clot or to dissolve that clot we are using anticoagulants, we are using thrombolytics, we are using antiplatelet drugs. So before that you should know how there is a normal homeostasis, how there is a clotting of blood. So normally we have already seen this, but again I want to repeat it. So you should know you should know how there is a clotting of blood. Blood clot कैसे होता है? How there is a clotting of blood. Blood seize कैसे होता है? How there is a coagulation of blood. How there is a clotting of blood. So clotting of blood is effected in 3 stages. उसके 3-4 स्टेज होते हैं. Stage 1, Stage 2 and Stage 3. Stage 2 and Stage 3. So they are the common for both pathways. In the Stage 1 you have 2 pathways in the Stage 1. Suppose that if there is injury to your blood vessel. Blood vessel कहाँ पे होता है? If there is injury to blood vessel is inside in the body. ब्लड वेसल कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं. सो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक मींस इनसाइड द बॉडी. सो इनसाइड द बॉडी इफ देयर इज अ डैमेज टू योर ब्लड वेसल, सो देन हाउ देयर इज अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो इफ देयर इज डैमेज टू योर ब्लड वेसल, सो endothelial layer, that is endothelial damage. Because of damage collagen will be, okay, collagen means it is a protein. If there is damage to your blood vessel, there is a release of this protein collagen from the blood vessel. Okay, so endothelial damage and collagen exposure will be there. So inside the body, अगर आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है उसको अगर इंजरी होता है तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा. दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक मतलब अंदर का पाथवे. ठीक है. So what will happen over there? What is the blood coagulation process? It is a very complex process and it involves cascade of your different blood clotting factors, activation of different blood clotting factors, and formation of insoluble fibrin thread or insoluble fibrin clot. There is injury to your blood vessel inside the body, so endothelial damage will be there and there will be exposure of collagen. So at that time there is a activation of these factors. There is a activation of this kallikrein and high molecular weight kinogen. Kallikrein and high molecular weight kinogen will start a cascade of cascade of multiple reactions to activate the different clotting factors. तो जैसे डैमेज होता है ये 2 फैक्टर रिलीज हो जाएंगे, कैलिकायरिन एंड हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन. तो ये क्या करेगा? ये जो आपके ब्लड में इनएक्टिव फैक्टर होते हैं, सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव. So inactive blood clotting factors number 12, that is known as Hagman factor. Factor number 12 will be converted into active factor 12A. So active factor 12A, A means active. So ये inactive है. 12 inactive है, 12A active है. So 12A will be activated and 12A along with again human high molecular weight kinogen will activate the inactive factor 11. 11 क्या है? Inactive factor in the blood. So that will be activated. Again active factor 11 along with the calcium will activate. ये activate किसको करेंगे? Factor number 9, inactive factor number 9 will be activated into active factor number 9A. Now active factor number 9A along with the factor number 8, that is known as anti-embolic factor A, and along with the calcium will activate the factor number inactive factor number 10 into active factor 10A. Okay, that's all. Okay, then this exposed collagen also attracts the platelets. जो thrombocytes होते हैं they will be attracted. Then after that platelet cell membrane will become loose, release the phospholipids that will also attract more platelets and also start the activation of this factor, activation of prothrombin. This is a intrinsic pathway. Now this they will activate the prothrombin activator.
So prothrombin activator means क्या होता है? In your plasma there is a inactive prothrombin. Prothrombin. So this factor 10 will activate the prothrombin and convert prothrombin into thrombin. Thrombin में convert हो जाएगा ये. Thrombin will act on a will act on a fibrinogen. Will act on a fibrinogen. Fibrinogen is also again one clotting factor in your blood. It will be activated into fibrinogen A. Now fibrinogen A will get polymerized. इसका polymerization हो जाएगा और fibrinogen A का polymerization होगा and there will be formation of loose strands of your fibrin. Fibrin का threads बन जाएगा. These loose fibrin threads they need to convert into tight fibrin clot. Now for that you need this factor number 13. Factor number 13 and calcium. So factor number 13 is known as a fibrin stability factor. Factor number 13 is a fibrin stability factor. So ये क्या करेंगे फाइनली ब्लड क्लॉट करेंगे एंड उसके बाद में आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. दिस इज नोन एज अ इंट्रिंसिक पाथवे. ये क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे. व्हाट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे? अगेन सेम थिंग. सपोज दैट देयर इज अ डैमेज टू योर टिश्यू. आपका कोई लेग में या फिर हाथ में कोई डैमेज हो गया. एक्सट्रिंसिक पाथवे लेग का पे हाथ का पे बॉडी के बाहर है. So extrinsic pathway. Tissue trauma. Damage to a tissue means tissue trauma, and there is a release of tissue thromboplastin. So they will activate the. There is a release of tissue thromboplastin and glycoprotein and phospholipids because there is damage to your cell. Cell को damage होगा तो उसका जो cell membrane है phospholipid का वो भी damage हो जाएगा. वहाँ से phospholipid, glycoprotein, tissue trauma plus thromboplastin ये सब हो जाएगा release. Now these released phospholipids, glycoproteins, they will activate one factor known as a factor number 10. Along with the factor number 7, blood clotting factor 7, they will activate the factor number 10. Factor number 10 क्या है? It is known as a steward power factor. Number 10 क्या है? Steward power factor. Equal to 10A. 10A along with the calcium and factor number 5 will directly activate the thrombin activator. Thrombin को activate करने के मतलब क्या है? So prothrombin will be converted into thrombin, and thrombin will convert fibrinogen into fibrinogen A. Now there will be polymerization of fibrinogen will form a loose fibrin threads or strands. Fibrin stability factor and calcium will convert loose thread into tight clot. So that's how there is a clotting of blood in the body. तो बॉडी में नॉर्मली इस टाइप से क्लॉटिंग होता है. अभी ये नॉर्मल प्रोसेस समझ में आ गया है तो इसके ऊपर आपको ड्रग्स समझ में आएंगे. अगर ड्रग्स के समझना है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, यू हैव टू रिमेम्बर. अगर फिजियोलॉजी समझ में आता है तो आपको बाद में क्या समझ में आएगा, आपको ड्रग्स समझ में आएगा. सो दिस इज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. नाउ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज होमियोस्टैसिस. होमियोस्टैसिस इट इज आल्सो नोन एज blood cessation or blood clotting. Anticoagulants. So what do you mean by anticoagulants? Anticoagulants means these are the drugs which will prevent the blood coagulation. They are the drugs which will prevent the blood coagulation. तो मैंने पहले बोला है ब्लड कोगुलेशन के लिए आपको सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्लेटलेट जो है प्लेटलेट एक्टिवेट होके प्लेटलेट प्लग बनाएगा. उसके बाद में क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का मैकेनिज्म चालू हो जाएगा. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विल बी एक्टिवेटेड. Right now, anticoagulants they are of three types. First, anticoagulants they are of three types. Anticoagulant drug जो है वो तीन टाइप के एंटीकोएगुलेंट्स. कितने टाइप के? तीन टाइप के. ठीक है, कौन से तीन? देखो एंटीकोएगुलेंट्स. फर्स्ट टाइप पहला वाला ये है एंड सेकंड कौन सा है? ये है. एंटीकोएगुलेंट they are mostly of two type. First, anticoagulants they are known as in vivo. INVIO in vivo मतलब क्या? Inside the body. In vivo they are known as in vivo anticoagulants. So these first two major classes, these two are known as in vivo anticoagulants, and this is known as in vitro anticoagulants. In vitro anticoagulants. अभी in vivo anticoagulants मतलब क्या? तो ये क्या करेंगे? These drug will prevent the coagulation of blood inside the body. ये बॉडी में ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होने देंगे. That's why they are known as in vivo anticoagulants. ये क्या है? In vitro anticoagulants. These are the in vitro anticoagulants. These drug will prevent the coagulation of blood outside the body. In vivo मतलब inside the body, in vitro मतलब outside the body.
So these are the drug which will prevent the coagulation of blood inside the body. ये जो दो major classes है, they will prevent clotting of blood inside the body. So they are known as in vivo coagulant. In vivo coagulant. These are the drug, they are known as in vitro coagulant. In vitro मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपने ब्लड बॉडी में से विड्रॉ किया, सो 10 ml ब्लड निकाला सिरिंज से, और वो आपने उसको आपका टेस्ट करना है. अगर आपने ब्लड निकाल के वैसे लेके गए तो वो क्लॉट हो जाएगा एंड दैट विल इंटरफेयर विद द टेस्ट पैरामीटर्स. यू नीड anticoagulant in that blood. In vitro anticoagulant means they will prevent the clotting of blood outside the body, that is in the test tube. So these are the in vitro anticoagulants. So what are the example? So heparin, sodium sodium ethate, sodium citrate, sodium oxalate. So these are known as in vitro anticoagulant. In vitro मतलब ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती. heparin, sodium ethate, sodium citrate, sodium oxalate. So they will prevent the clotting of our blood, they will prevent the coagulation of blood in vitro in the test tube. Okay, and will जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकला, अगर आपने उसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं ऐड किया तो वो ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा एंड यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑन दैट. टू गेट अ प्रिसाइज रिजल्ट, टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, यू नीड टू ऐड एंटीकोएगुलेंट. देखो आप जब ब्लड देते हो सैंपल विड्रॉ करके, तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रॉपर कंटेनर में लेते हैं, उस कंटेनर में ऑलरेडी एंटीकोएगुलेंट होता है, तो उसमें ब्लड डाल देते, मिक्स करते, थोड़ा शेक करते और रख देते, सो दैट दैट ब्लड विल नॉट बी क्लॉटेड. Okay, so what are the in vitro anticoagulants? Heparin, sodium ethate, sodium citrate, sodium oxalate, इसको बोलेंगे in vitro. Okay, now in vivo anticoagulant. In vivo कौन है? In vivo anticoagulant. In vivo means inside the body. In vivo means inside the body. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि this heparin is in vivo plus in vitro. ये जो heparin है आपका, that is in vivo as well as in vitro coagulant. In vivo as well as in vitro anticoagulant, ये दोनों है. Now in vivo anticoagulant, ये वाले in vivo anticoagulants they are classified into two major classes. पहला कौन सा क्लास है? मेजर वन, parenteral anticoagulants. Parenteral मतलब क्या? So they are given by parenteral routes. तो इनको कैसे देना है? इंजेक्शन से देना है, ये सिर्फ इंजेक्टेबल है. So parenteral anticoagulants इंजेक्टेबल है. एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, ओरल मीन्स ये आप टैबलेट्स कैप्सूल में दे सकते हो, दे आर नोन एज ओरल एंटीकोएगुलेंट. सो in vivo anticoagulant, in vivo anticoagulants are classified into two, parenteral and oral. Okay, now parenteral anticoagulants again they are classified into two types. So first class is direct thrombin inhibitor. Okay, first class is indirect thrombin inhibitor. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन, तो ये इनडायरेक्टली क्या करेंगे, थ्रोम्बिन जो है आपका, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेंगे, इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेंगे. सो इन दैट यू हैव हेपेरिन, इट इज नोन एज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. याद रखो क्वेश्चन आ चुका है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. हेपेरिन इज नोन एज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट बिकॉज हेपारिन, हेपा मतलब लिवर, so it is a anticoagulant protein first was identified in the liver, and that's why it is known as a heparin. Heparin unfractionated, that is a indirect thrombin inhibitor, heparin. Okay, nowadays it is also found in the lungs, high quantity में ये कहाँ पे आता है, lungs में आता है, और it is also found in the GIT. Heparin is a mucopolysaccharide, it is a mucopolysaccharide. You have to write down certain notes while explaining the things. मैं जब बोलता हूँ तो आपको, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा होता है, so that's why I'm explaining. Okay, now in that you have again low molecular weight heparin, low molecular weight heparin. तो ये जो heparin है उसका molecular weight होता है 10 to 20,000 डेल्टन, इसका होता है 10 to 20,000 डेल्टन. और ये लो molecular weight heparin मतलब इसका molecular weight कम होता है, so 7 to okay, so 4 to 7,000 डेल्टन. तो इसका 4 to 7,000, इसका होता है 10 to 20,000. So ये low molecular weight heparin. In that you have enoxaparin, rivaparin, atroparin, dalteparin, pernaparin, arteparin, and these two last two, fondaparinux and donaparoid. Fondaparinux and donaparoid, they are known as a heparins. So heparins, they are known as heparins. They are also a type of protein containing heparin, heparins.
In that parenteral, you have second class known as a direct thrombin inhibitor. Example is lepirudin, bivalirudin, and argatroban. Liparudin, lepirudin, bivalirudin, and argatroban. So you can remember this by one trick known as a lab. AAV lab. So you can remember this direct thrombin inhibitor by one trick known as a lab. Okay? So they are known as a parenteral coagulants. Now oral anticoagulants. Oral anticoagulants. Orally जो देते हैं उसको. Now in that you have three subclasses. First one is known as a coumarin derivative. Coumarin derivative. इसमें क्या होता है? Coumarin ring होगा. They are known as a coumarin derivative. So in that you have bis hydroxycoumarin, also known as a dicoumarol. Then warfarin sodium. Then acinocoumarol, also known as a nicomalone. Acinocoumarol or now nicomalone. Ethyl biscaumia. Ethyl biscaum. These are the coumarin derivative. इसमें क्या रहेगा? Coumarin ring रहेगा. इसका mechanism वगैरह अपन बाद में देखेंगे because now direct factor 10 inhibitor. What is factor 10? Is known as a Stewart power factor. Right? Direct factor 10 inhibitor as a rivaroxaban. Right? Oral direct thrombin inhibitor. In that you have dabigatran etexylate. Dabigatran etexylate. So these are the anticoagulants. Fibrinolytics मतलब क्या है? पहले अपन antiplatelet देखेंगे because antiplatelets they are also comes under the anticoagulants. पहले अपन antiplatelet drugs देखेंगे. Antiplatelets they are also anticoagulants. So they will inhibit the platelet aggregation. जो पहले इंजुरी होने के बाद में जो कोलेजन एक्सपोजर होता है वहाँ पे जो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे क्या बनाएंगे? वो प्लेटलेट प्लग बनाएंगे. That is the primary requirement for the coagulation. So these drugs they are known as anti-platelet. So they will prevent the platelet aggregation. ये क्या करेंगे? प्लेटलेट का जमा नहीं होने देंगे. प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स को जमा नहीं होने देंगे. So in that you have different classes. First class is nothing but a thromboxane synthesis inhibitor. Thromboxane synthesis inhibitor. मतलब क्या है? Thromboxane. In that you have aspirin or salicylic acid. Acetyl salicylic acid. So this aspirin will prevent the synthesis of thromboxane. TAX. So thromboxane TAX. Thromboxane A2. So they will inhibit the formation of thromboxane. So aspirin. Then second class आएगा उसमें आपका platelet cyclic AMP enhancer. Platelet cyclic AMP enhancer. अभी आपको ये समझ में आएगा ये thromboxane synthesis inhibitor क्या है, platelet cyclic AMP enhancer क्या है, because ये जब mechanism देखेंगे तब समझेंगे. So platelet cyclic AMP enhancer ये क्या करेगा? Dipyridamole. Example is a dipyridamole. So it will increase the cyclic AMP level in the platelet. Cyclic AMP means cyclic adenosine monophosphate CAMP. So it will increase the level of CAMP. So increased level of CAMP in the platelet. जो प्लेटलेट होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स उसमें अगर साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ गया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा. साइक्लिक एएमपी लेवल अगर कम हो गया तो वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा. अगर थ्रोम्बोक्सेन जो है थ्रोम्बोक्सेन इज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन एनहांसर. तो थ्रोम्बोक्सेन बढ़ गया तो प्लेटलेट का क्या होता है? एग्रीगेशन होता है. तो थ्रोम्बोक्सेन इनहिबिटर aspirin will prevent the platelet aggregation. Now third class in the anti-platelet drug. Third class है P2Y12 receptor blocker. ये रिसेप्टर कौन सा है नया वाला? डायरेक्टली बोलेंगे ADP. क्या बोलेंगे? ADP. You can say ADP receptor antagonist. Y12 receptor blocker. So this receptor is also there in a प्लेटलेट. प्लेटलेट के ऊपर एडीपी होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर. सो एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और P2Y12 receptor blocker. So they are also known as antiplatelet. So example is ticlopidine, clopidogrel and prasugrel. So इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं. ये सभी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो क्वेश्चन आपको आता है following is a anticoagulant drug or antiplatelet drug act as a platelet ADP receptor antagonist. Or following drugs
act as an antiplatelet agent by inhibiting the thromboxane synthesis. Aspirin. AP receptor antagonist or P2Y12 receptor blockers, ticlopidine, clopidogrel and prasugrel, right? उसमें आता है फोर्थ कैटेगरी एंटीप्लेटलेट एजेंट्स और एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट. तो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये भी क्या होता है, प्लेटलेट जो है आपका, प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइट, उसके इसके ऊपर ये भी रिसेप्टर होता है, जीपी थ्रू 2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. This receptor is involved in the, this receptor is responsible for the attachment of your this thrombocytes to the damaged vascular endothelium. जहाँ पे कोलेजन रिलीज होता है ना, कोलेजन के साथ में ये अटैच होता है कौन, प्लेटलेट्स, by using this receptor GP through GP2B3A. तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, तो उसको एंटागोनिस्ट, उसके एंटागोनिस्ट को नहीं. सो AB6 इप्टीफिबाटाइड, टिब्रोफिबान. So AB6 iptifibatide and tibrofivir. These are the three drugs which inhibit the glycoprotein second B3A receptor. Okay, this is antiplatelet. जो पहले देखा था anticoagulants. Okay, so antiplatelets, they will prevent the platelet aggregation and they will act as a anticoagulant again. So जो पहले देखे थे, they are known as a direct anticoagulant. Okay, they are direct acting. These are the indirect. They will prevent the platelet aggregation. Now, if there is thrombus already, अगर आपके ब्लड में ऑलरेडी क्लॉट है, so if there is a already blood clot in the, you have to break down that clot. So how to break that clot, or you have to break that clot? So by using fibrinolytics or thrombolytics. Thrombo मतलब क्या, thrombus मतलब क्या है? So there is a clot of blood is known as a thrombus. Clot of blood inside the blood is known as a thrombus. So जो already clot है उसको कैसे break करेंगे? So they are known as a thrombolytics or fibrinolytics. So in that you have all these drugs, they are known as a tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator. So in that you have streptokinase, often from Streptococcus bacteria, urokinase, often from urine. Then these retapase and tenectapase, they are nothing but the recombinant DNA technology tissue plasminogen activator. They will break down the clot. जो ऑलरेडी क्लॉट बन चुका है आपके ब्लड में, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स, राइट. इनके बारे में डिटेल में अपन बाद में देखेंगे. एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स मतलब क्या है, जो ब्लड का क्लॉट जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे फाइब्रिनोलाइटिक्स. और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स मींस दे वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू फाइब्रिनोलाइटिक्स. दे आर नोन एज अ प्रो कोएगुलेटरी एजेंट्स. ये क्या करेंगे, कोएगुलेशन को इंक्रीज कर देंगे. इन दैट यू हैव एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटी फाइब्रोलाइटिक्स. इन दैट यू हैव इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड TACA, देन ट्रेक्सानेमिक एसिड आर द कोएगुलेंट्स. ये क्या है, कोएगुलेंट्स. ये क्या है, जो क्लॉट होगा है उसको ब्रेक करने वाले. ये क्या है, प्लेटलेट एंटीप्लेटलेट. ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देंगे और बाद में बाकी का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देंगे. जो ऊपर वाले ड्रग्स हैं ये क्या है, दे आर नोन एज एंटीकोएगुलेंट्स. ये कोएगुलेशन होने नहीं देंगे. एंटीप्लेटलेट वाले भी कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, ये भी कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, ठीक है. एंटी फाइब्रिनोलाइटिक और फाइब्रिनोलाइटिक्स जो है, थ्रोम्बोलाइटिक्स, फाइब्रिनोलाइटिक्स, दे विल ब्रेक डाउन द ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट. क्लॉट अगर ऑलरेडी है तो उसको ब्रेक डाउन करने वाले ये ड्रग्स है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, अल्टेप्लेस, रेटेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस. एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स मतलब जो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स मतलब ये क्या करेंगे, क्लॉट बनाएंगे, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स. और ये क्या करेंगे, कोएगुलेशन बढ़ाएंगे. एग्जांपल क्या है, इप्सिलॉन अमीनो कैप्रिक एसिड एंड टैक्सानेमिक एसिड. This was the classification. We will see the next. Again, you can see the classification here because classification is very important. Classification दो तीन बार लेंगे because it is important. So drugs used in the disorders of coagulation. ठीक है, ब्लड का कोएगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है या फिर आपका इसमें क्लॉटिंग वगैरह बनता है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. क्लॉट अगर बन गए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है. नाउ प्रो कोएगुलेंट्स. प्रो कोएगुलेंट्स मतलब क्या है, दे आर नोन एज कोएगुलेंट्स. प्रो कोएगुलेंट्स ये क्या करेंगे, ब्लड का कोएगुलेशन फास्ट करेंगे.
So in that you have adrenaline, it is a vasoconstrictor, and thrombin, it's a blood clotting factor, fibrin, blood clotting factors, gelatin foam, astringent like tannins, and vitamin K. Procoagulants means they will increase the coagulation of blood. So procoagulants, in that you have adrenaline, thrombin, and all blood clotting factors, thrombin, fibrin, and all. Then gelatin foam, astringent like tannins and vitamin K. Vitamin K is कोएगुलेंट. याद रखो विटामिन के क्या है, कोएगुलेंट. ये ब्लड को कोएगुलेट करेगा, ये ब्लड का क्लॉटिंग करेगा. क्यों? Because vitamin K is important for the synthesis of blood clotting factors. So vitamin K is a coagulant. So procoagulants or coagulants, इनको coagulants भी बोलेंगे. Anticoagulants, ये क्या करेंगे, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देंगे. In that you have heparin, low molecular weight heparin like enoxaparin, dalteparin, oral anticoagulants like warfarin, nicomalon, then penindione, anti-platelet drugs. So in that you have, these drugs will prevent the platelet aggregation and further prevent the clotting of blood. Aspirin is a thromboxane synthesis inhibitor. Then dipyridamole, it is a cyclic AMP enhancer. Clopidogrel, it is a ADP receptor antagonist. Then AB6 map, iptapibatide. Okay, these two are nothing but the glycoprotein 2B3A receptor antagonist. And this epoprostenol is a prostaglandin E2 analog. Prostaglandin E2 analog. Prostaglandins का भी रोल होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में. Increased prostaglandin will decrease the platelet aggregation. So epoprostenol is used. तो ऑलरेडी क्लॉट बन चुका है बॉडी में, उसको ब्रेक करने वाले ड्रग कौन से, फाइब्रिनोलाइटिक्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स. इन दैट यू हैव स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस. स्ट्रेप्टोकाइनेस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस बैक्टीरिया, वहां से आ चुका है. यूरोकाइनेस इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन. ठीक है. अल्टाप्लेस, अनिस्ट्राप्लेस एंड रेटिप्लेस. Alteplase and retiplase, these are the recombinant tissue plasminogen activator. Anistaplase is nothing but it is a modified derivative of your streptokinase. Now antifibrinolytics, they are also known as जो फाइब्रिन होता है वो उसको उसके अगेंस्ट में. So they are coagulation agents. They will increase the coagulation process. So epsilon amino caproic acid, then tranexamic acid, then aprotinin, tranexamic acid and aprotinin. So this is the classification. Okay, see the chapter in the detail. पूरा chapter detail में coagulants, anticoagulants and thrombolytics terms मैंने already explain किया है. Coagulants means those drugs which will increase the coagulation or clotting of blood. Anticoagulants means those which will prevent the coagulation or clotting of blood. Thrombolytics means which will break down the already coagulate, which will break down the already formed clot. So coagulants क्या करेंगे, ये blood को coagulate करेंगे. Like vitamin K. Okay, vitamin K is the blood coagulant. Gelatin, adrenaline. Okay, like blood clotting factors, they are the coagulants, right? Now anticoagulants means they are the different types. जैसे oral anticoagulants या फिर पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स, उसमें हेपेरिन वगैरह, लो मोलिकुलर हेपेरिन, डाइकोमेरॉल. ठीक है. एंटीप्लेटलेट एजेंट्स सब आएंगे. थ्रोम्बोलाइटिक्स मींस व्हाट, दे विल ब्रेक डाउन द ऑलरेडी फॉर्म्ड ब्लड क्लॉट. इन दैट स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, अल्टाप्लेस वगैरह. एंटीकोएगुलेंट्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट स्टेजेस. ओके, सो दे एक्ट ऑन अ फर्स्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे, दो तीन स्टेप के ऊपर एक्ट करते है. platelet aggregation, so platelet aggregation inhibitors or antiplatelet agents, they are also anticoagulants. Antiplatelet agents, they are also anticoagulants, remember. Then anticoagulants also act on a clot or fibrin formation, so they are known as fibrinolytic drugs. Fibrinolysis, they are known as thrombolytics. Okay, blood coagulation or thrombus formation or hemostasis or stopping of bleeding.
from the blood vessel. What is the blood coagulation? So it is the process of stopping of bleeding, okay, from the blood vessel. It is also known as a blood coagulation or thrombus formation. Hemostasis is nothing but the stoppage of blood from damaged blood vessel. तो आपका अगर है ना, आप बोलते हो नहीं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मर जाए, ठीक है, तो फिर वो अपनी कलाई काट लेता है। कलाई काटने के बाद में कोई मरता नहीं है, ब्लीडिंग होता है थोड़े टाइम पे, बाद में हॉस्पिटलाइज करके वो पूरा ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है। कोएगुलेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, हेमोस्टेसिस। व्हेन देयर इज अ कट टू योर ब्लड वेसल, आपका आपका ब्लड वेसल कट हो गया है, व्हेनेवर देयर इज अ कट टू योर ब्लड वेसल, it leads to constriction of capillary of the blood vessel. So when there is a cut to your blood vessel, अगर आपका blood vessel damage हो गया, so what will happen? When there is a cut to your blood vessel, there is a vasoconstriction. There is a vasoconstriction of capillaries near to the blood vessel, and because of that vasoconstriction and because of the damaged blood vessel, there is a exposure of collagen. So what will happen? There is a adherence of platelet. जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट होता है, वो क्या होगा, वहां पे जमा हो जाएगी. देयर इज एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट टू ए एक्सपोज्ड कोलेजन फाइब्रिल इन द एंडोथेलियम ऑफ योर ब्लड वेसल, इन द सब एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल वाया कोलेजन रिसेप्टर. तो जो कोलेजन एक्सपोज हो चुका है आपके ब्लड वेसल का, जो टूट गई ब्लड वेसल, वहां पे जो कोलेजन एक्सपोज हो चुका है, वहां पे platelets attach होंगे. Platelets will adhere to that exposed collagen, and that will adhere via one receptor known as a glycoprotein first A and second A receptor. Platelets will adhere to collagen via glycoprotein receptor. Okay. Now this leads to this adherence. This attachment or adherence of platelet leads to a release of preformed platelet granules and de novo mediators of coagulation. De novo mediators मतलब क्या? De novo mediators. De novo mediators means blood clotting factors. Release of blood clotting factors and de novo mediators of again platelet aggregation. De novo मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होंगे. So they also promote the platelet aggregation. So de novo mediators of coagulation factors, including ADP. क्या है ADP? Which causes more platelet aggregation. Now primary coagulation plug is formed. जैसे प्लेटलेट एडियर होके वहां पे आएगा कोलेजन के ऊपर, और भी प्लेटलेट्स वहां पे एडियर हो गए, एंड दैट फॉर्म्स अ प्राइमरी कोलेजन प्लग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है. तो वहां पे प्लेटलेट जमा होंगे, वहां पे ब्लॉक कर देंगे. सो दैट इज अ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. और प्लेटलेट विल लूज देयर सेल मेम्ब्रेन. प्लेटलेट है उसका सेल मेम्ब्रेन लूज हो जाएगा and will form a viscous mass, and also promote the assembling of this viscous mass, also attracts more platelet and also promote the assembling of clotting factors, and therefore amplify the formation of thrombin, and then finally clot. Okay. So activated platelets generate thromboxane A2. जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है, एक्टिवेटेड मतलब जो प्लेटलेट अटैच होंगे आपके डैमेज्ड ब्लड वेसल को, उसके बाद में उसका मेम्ब्रेन लूज होगा, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड प्लेटलेट. सो एक्टिवेटेड प्लेटलेट जनरेट वन केमिकल नोन एज thromboxane A2. Thromboxane A2. Again thromboxane A2 is a platelet potent platelet aggregation enhancer. मतलब ये thromboxane A2 क्या करता है, फिर भी और प्लेटलेट्स को बुलाता है. It is also known as a thromboxane A2 is a potent platelet agonist. So it will also agonist. It will also increase the aggregation. Again, बाकी और कौन है platelet agonist? So other factors are also there. For example, shear stress, collagen, ADP. So they are also platelet agonist. ये भी है platelet agonist. So ये क्या करेंगे, और platelet को attract करके वहाँ पे platelet plug बनाएंगे. और सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन मतलब आपके ब्लड में जो फाइब्रिनोजन है, that binds to a platelet receptor. Now fibrinogen is converted into fibrin and that get deposited in the that damaged vessel. That is known as a coagulation. A formation of fibrin or blood clot is a series of interaction between different blood clotting factors in the plasma which are synthesized in the liver. That's how blood is stopped. प्लेटलेट्स के ऊपर क्या क्या रोल है, प्लेटलेट्स का रोल क्या है कि
जहाँ पे डैमेज हो गया वहाँ पे प्लेटलेट्स जाएंगे, वहाँ पे एडियर हो जाएंगे, दे विल लूज देयर मेम्ब्रेन, लूज मेम्ब्रेन होने की वजह से वहाँ पे विस्कस मास बन जाएगा, दैट विल आल्सो प्रमोट मोर एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स एंड दे विल आल्सो सिंथेसाइज द थ्रोम्बोक्सिनेट which is again more platelet aggregation enhancer। और भी आते हैं एडीपी भी, एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट वो भी आता है, ठीक है। देन उसके बाद में फाइब्रिनोजन उसके साथ में अटैच होके फाइब्रिन का क्लॉट बनाता है। We have seen this 2-3 times, okay? Intrinsic we have seen this। now factor number 12, जैसे there is a damage to your blood vessel, factor number 12 will be activated by human high molecular weight kininogen। so this factor will be converted into this factor number 12 along with the high molecular weight kininogen will activate the this factor number 11 into 11A। okay, then factor 9 will be activated, then factor 8 will be activated, right? So finally we have seen this pathway, okay? This heparin is an anticoagulant. Heparin is an anticoagulant that will also inhibit this factor. Heparin inhibit this factor number 12A, that is known as a Hagman factor। Heparin also inhibit this factor number 11, number 9 also inhibit this factor number 10, also inhibit thrombin, also inhibit this factor number 13। factor number 13 is known as the fibrin stability factor। तो ये heparin इतने सारे फैक्टर को इनहिबिट करता है, okay? And that's why heparin is an anticoagulant, okay? We have seen this process 2-3 times, that's why I'm not taking on it, okay? So what are the vitamin K dependent factors? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, कौन से फैक्टर है जिसको विटामिन के लगता है, okay, for the synthesis? So vitamin K dependent factors or the factors or blood clotting factors which requires vitamin K for the synthesis. So these are nothing but the factor number 12, factor number 2. Factor number 2 is a prothrombin. Then factor number 7, factor number 9, and factor number 10. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा है जीपीएट में, ओके। विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। नॉर्मली ब्लड इज केप्ट फ्लूइड बाय, जैसे ब्लड नॉर्मली क्यों नहीं होता कोएगुलेशन ब्लड का, ब्लड इज केप्ट फ्लूइड बाय रैपिड ब्लड फ्लो चलते रहते हैं। देन एंटीथ्रोम्बिन 3, एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या है, इज आल्सो प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। एंटीथ्रोम्बिन 3, एंटीथ्रोम्बिन नाम क्या है देखो, एंटीथ्रोम्बिन, तो ये थ्रोम्बिन के अगेंस्ट में काम करना है, सो इट विल प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, रैपिड ब्लड फ्लो एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड removal of fibrinolysis, removal of traces of fibrin by fibrinolysis which are formed in circulation। अगर नॉर्मली ब्लड में छोटा मोटा क्लॉट बनता भी है, that is broken down by body's mechanism by fibrinolysis, and that's why blood is kept fluid। कितना फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये भी अपने 2-3 बार देखा है। अगेन फैक्टर नंबर 1 is a factor number 1 is a fibrinogen, factor number 2 prothrombin, factor number 3 thromboplastin, factor number 4 calcium, factor number 5 proaxelrin or hereditary labile factor, factor number 6 क्या है, axelrin और active factor of factor 5, factor number 7 proconvertin और serum prothrombin conversion accelerate, factor number 8 क्या है, it is known as anti-hemophilic factor A, factor number 9 क्या है, Christmas factor, factor number 10 Stewart power factor, factor 11 plasma thromboplastin antecedent factor, is known as anti-hemophilic factor C। ये C है anti-hemophilic factor, ये है B है, ये वाला A है। factor number 8 is anti-hemophilic factor 1 और anti-hemophilic factor A, factor number 10 is anti-hemophilic factor B, factor number 11 anti-hemophilic factor C, okay? Now factor number 12 is known as a Hagman factor, factor number 13 is known as fibrin stability factor, factor number 14 is a pre-calligyrine, factor number 15 is a calligyrine, factor number 16 is a platelet factor। We have already seen this factor। again number 1 is a fibrinogen, ये फैक्टर कितनी बार लिया मैंने, क्यों, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फैक्टर नंबर 1 is fibrinogen, 2 is a prothrombin, 3 is nothing but the tissue factor or thromboplastin, 4 is calcium, 5 is a labile factor or proaxelrin or acetylcholine, factor number 7 is a stable factor or proconvertin, factor number
8 is an anti-hemophilic globulin or anti-hemophilic factor A. 9 क्या है? Christmas factor, plasma thromboplastin component PTA, plasma thromboplastin antigen component or anti-hemophilic factor B. Factor number 10, it is known as a Stewart power factor, anti-hemophilic factor C, 12 Hagman factor and 13 Papin stability factor. तो ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से? विटामिन के. So factor number 2, 7, 9 and 10, they are known as a vitamin K dependent factor, because vitamin K is important for the synthesis of these factors, not for precisely synthesis, for the activation of this factor. Vitamin K is important. Thrombogenesis मतलब formation of clot. Thrombogenesis is a pathological process in which there is a formation of intravascular clot. Okay, normally thrombogenesis मतलब क्या है? Formation of clot. It is a pathological process in which there is a formation of intravascular clot normally. Now it is prevented by vascular endothelium, smooth vascular endothelium, prostaglandin I2, antithrombin 3 and protein C, heparan sulfate and proteoglycan. ये आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स है. ये ऑलरेडी बॉडी में एंटीकोगुलेंट्स है. उनसे prostaglandin I2, antithrombin 3, protein C, heparan sulfate, okay, और heparan sulfate, proteoglycan, ये ऑलरेडी आपके बॉडी में एंटीकोगुलेंट्स है, बट ये हो जाते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स यूज करना पड़ता है. सो ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस, दे आर आइदर एंटी-प्लेटलेट एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट. एंटी-प्लेटलेट एजेंट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है? एंटी-प्लेटलेट एजेंट्स, mechanism of action of anti-platelet agent. Cyclic AMP from the platelets has an important role in the platelet aggregation. So platelet को जमा करने में किसका रोल होता है? Cyclic AMP, cyclic adenine monophosphate. Platelet endothelial prostaglandin I2. प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में, प्लेटलेट को जमा करने में साइक्लिक एएमपी का रोल होता है. प्लेटलेट एंडोथेलियल PGI2, तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है प्लेटलेट में, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. दैट स्टिमुलेट्स द एडेनिल साइक्लेज. ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? स्टिमुलेट द एडेनिलेट साइक्लेज एंड फॉर्मेशन ऑफ cyclic AMP and thromboxane A2. Cyclic AMP and thromboxane A2, which lowers the cyclic GMP, inhibits the platelet aggregation. ठीक है, cyclic AMP क्या है? प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है वो प्लेटलेट को इनहिबिट करता है. Decrease the level of this cyclic AMP is related with the anti-platelet effect. Increase the level of this. Okay, so aspirin जो है, aspirin that inhibits the synthesis of this thromboxane A2 in the lower doses. Now high intraplatelet cyclic AMP, प्लेटलेट के अंदर अगर साइक्लिक AMP का लेवल ज्यादा हो गया, okay, so that inhibit the platelet aggregation. अगर इंट्रासेलुलर प्लेटलेट में, okay, intracellular level of cyclic AMP in the platelet is decreased, that will stimulate the aggregation. तो cyclic AMP अगर कम हो गया प्लेटलेट में तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा. cyclic AMP अगर ज़्यादा होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा. Abnormal blood clots are mostly due to the abnormal synthesis of prostaglandin I2. Apart from this, endothelial nitric oxide also increases the cyclic AMP level in the platelet and inhibit the platelet aggregation. Now आपको यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ पे ये दो तीन चीजें याद रखना है. अब coagulants drugs क्या होते हैं? Those which will increase the coagulation of blood. So in that you have vitamin K. Vitamin K जो होता है उसके different forms होते हैं. So vitamin K has a different forms. First is the K1. Vitamin K1 is known as a hydroquinone. K3 is known as a menadione. These are the coagulants. They will increase the blood clotting. Fibrinogen, desmopressin, anti-hemolytic factor, adrenochrome, monosemicarbazole, ethamsilate, routine. These are the drugs which are used as a coagulant.